Good morning students, welcome to the lecture number 9 of chapter 3. In the previous lecture we have discussed about the definition and criteria of parallelogram, the properties of parallelogram. कौन हमें पढ़थले जे parallelogram हमें काहाको कहबा आ तार कोन properties अछि. Okay, so what is a parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral. It is a quadrilateral in which the opposite sides are equal. Equal means this symbol and this is equal to this. And parallel means this symbol, okay, and the opposite angles are also equal. That means this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. Then the other properties are the sum of two consecutive angles. Consecutive means pakha pakhi, nearest. The sum of any two nearest angle is equal to 180 degree. Suppose this is A, B, C, D. Then this angle plus this angle is equal to 180 degree. This angle plus this angle is equal to 180 degree. This angle plus this angle is equal to 180 degree. And this angle plus this angle is also 180 degree. So the sum of consecutive angles are 180 degree. And the opposite angles A and C are equal. B and D are equal. These are the properties. Then the next property, the two diagonal BD and AC, okay, intersect each other at O. Then at O point the two diagonals bisect. ताले कौन होबो त दुईटा को डायगोनल जो हमें ड्रा करूचंती से दुईटा को डायगोनल गोटे पॉइंट O अछि जोटी कि से माने परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त कर दियंती. Okay, they bisect each other. That means they intersect each other at an equal halves, two equal halves. ताले कौन हे जिवो ना ए जो डायगोनल ए पॉइंट रे समान दी भाग हे जिवो ताले कोन हे जिवो OB OD एंड ए डायगोनल ता ए जगह रे दुई भाग हे जिवो ताले हमें कोन पाएगा OA OC. So these are the various properties of parallelogram that we have discussed already. Today in this lecture we will discuss about another three types of parallelogram. The first one is known as, what is it? It is rhombus. Okay. So today we will discuss about what is a rhombus. We have already also discussed what is a trapezium. So what is a rhombus? See, this is the diagram of a rhombus. Okay. A, B, C and D. Okay. So a rhombus is also a quadrilateral. This is the first condition. So it must be a quadrilateral. Second condition is that in case of quadrilateral like rhombus, all the sides are of equal length. ताले कोन हबो ना rhombus रे चारिटा जाक साइड रो लेंथ समान हबो. एटा सबटो इंपोर्टेंट. किंतु पैरेललोग्राम रे कोन होतला ना ये या सहित समान, ये या सहित समान. एठी भी एग्जैक्टली सेम होजी कि नै मने करो ये 5 सेंटीमीटर ताले ये भी 5 हेतिबो ताले दिरा का समान हे गला. सिमिलरली एटा केते हेतिबो सेही 5 हेतिबो काना चारटा का साइड सेम. So all the four sides of a rhombus are equal. Okay, all the sides are of equal length. बुझियला. So हमें कोन लिखि परिबा, हमें लिखि परिबा जे AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Understood? Next property, the opposite sides are parallel. Parallel माने कोन कहथली, if the distance between two lines is fixed, दुईटा लाइन रे डिस्टेंस जदि सबले समान रहिला, एटा माने करो जे डिस्टेंस 85 सेंटीमीटर ए जगह रे भी 5 सेंटीमीटर एठी भी 5 सेंटीमीटर, right? Then these two lines are known as parallel lines. Similarly एठी ए लाइन और ए लाइन होजंती parallel and a line और a line होजंती parallel. So opposite lines or sides are parallel. Okay, so right, opposite sides are parallel. Okay, so you can write AB is parallel. A parallel symbol is parallel to
DC and AD side is parallel to BC. बुझेला कि नहीं? So ये तीनटा होची सबटा important properties. First कथा हला एटा quadrilateral हेतिबो, second हला all the sides are of equal length, and third हला कोन ना ए side या से तो parallel and this side is parallel to this side. Understood? बाकी यार जहां भी property is equal to the properties of parallelogram. बुझेला? बाकी यार जति प्रॉपर्टी अछि आ परे हमें जहां भी पढिबा तार प्रॉपर्टी जहां पैरेललोग्राम रो भी प्रॉपर्टी से आ बुझेला कि नहीं वर्तमान में पढिबा से प्रॉपर्टी गडा को कोन एटा होची तीनटा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आ ऑप्शनल प्रॉपर्टी गडा कोन हमें वर्तमान पढिबा ओके सो एठी भी ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन केस ऑफ rhombus the opposite angles are also equal ta mane angle D and angle B same angle A and angle C same so opposite angles are equal so you can write angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D बुझे लगी नहीं ए प्रॉपर्टी कहा को भी फॉलो करे पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी थिला कि नहीं ऑपोजिट एंगल गुडा का समान यार भी ऑपोजिट एंगल गुडा का समान सेकंड जिंस होची कोन ना सम ऑफ द कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री पाखा पाखी जति भी एंगल अछंती सेमान को हम मिसई दबा तल ताका आंसर केते बाहरिबो एडिशन केते बाहरिबो 180 डिग्री बाहरिबो ओके इन केस ऑफ पैरेललोग्राम सेम रूल आल्सो फॉलोज पैरेललोग्राम रे भी समान जिंस होतला जदि हमें पाखा पाखी दुईटा एंगल को हम मिसैबा रिजल्ट सब बेले 180 डिग्री ही पाइबा सो हियर आल्सो सम ऑफ consecutive angles is 180 डिग्री हला कि नहीं माने कर मु D एंगल कथा चिंता करली त D एंगल consecutive एंगल किए कहलो एंगल C और एंगल A किनो एंगल B नो काई ना एंगल B होता ऑपोजिट एंगल सो D plus C is equal to 180 डिग्री लिखि परिबी और D plus A is equal to 180 डिग्री लिखि परिबी ओके C एंगल कंसेक्यूटिव किए B और D तले हम लिख परिबी C plus B is equal to 180 डिग्री और लिखि परिबी C plus D is equal to 180 डिग्री ऑलरेडी लिखा है एतबा लिखिया दरकार सिमिलरली एंगल B रे कंसेक्यूटिव होची C तले B plus C is equal to 180 डिग्री ऑलरेडी लिखा है और B plus A is equal to 180 degree. Similarly, for angle A, consecutive angles are B, so A plus B is equal to 180 degree already lekha hai and A plus D is equal to 180 degree already given. So sum of all the consecutive angle is equal to 180 degree. Okay. Next property, property number 6. The two diagonals. It has two diagonals. कौन डायगोनल गोटा होची AC आ गोटा होची BD देखिलो दुटा कर लेंथ कोन समान देखा होची एटा के छोट देखा होनी एटा के बड़ देखा होची त दुटा कर डायगोनल रो लेंथ समान होबो कि ना समान होबो नाही ओके सो द लेंथ ऑफ टू डायगोनल आर नॉट इक्वल बुझियला तले AC और BD आर नॉट इक्वल so AC is not equal to BD okay next property हला देखो AC diagonal और BD diagonal परस्पर को गोटे पॉइंट रे मीट करू जंती सपोज से पॉइंट हला O तले एग्जैक्टली पैरेललोग्राम भलिया प्रत्येक डायगोनल सेही पॉइंट रे बाइसेक्ट हे जिवे बाइसेक्ट माने समान दुई भाग रे विभक्त हे जिवे तले DB जो डायगोनल ए पॉइंट रे कोन हे जिवो इक्वल टू हाफ हे जिवो सपोज एटा होची 20 सेंटीमीटर तले एटा केते हे जिवो 10 एटा 10 सपोज एटा होची 8 सेंटीमीटर तले एटा हे जिवो 4 एटा हे जिवो 4 so at the point of intersection the two diagonal bisect each other हला so लिखो at point of intersection the two diagonal bisect each other okay ताले कोन हे गला ना OD is equal to OB
OD is equal to OB and OA is equal to OC. Okay, this is the 7th number property. Now last but not the least property, that is 8th number property. 8th number property यह हला जे जिते बेले दुईटा को डायगोनल परस्पर को मीट करजंती कोठी ओ पॉइंट रे बुझिला कि नै त सेमान भितरे गोटे एंगल क्रिएट होछि हला गोटे एंगल क्रिएट होछि ना नै चारटा एंगल क्रिएट होछि ना नै एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री ओके 90 डिग्री हला ये भी कहता है 90 डिग्री ये भी कहता है 90 डिग्री ये भी कहता है 90 डिग्री 90 डिग्री को हमें कोन कहि परिबा तार अलगा नेम होछि perpendicular okay and we know at this point the two diagonal bisect परस्पर को समान द्विभागे विभक्त करंती okay so you can write at the point of intersection the two diagonal are perpendicular bisector of each other perpendicular bisector माने परस्पर को 90 डिग्री रे समान द्विभागे विभक्त करंती okay so the two diagonals are perpendicular bisector of each other so इस सेंटेंस को भलरे बुझिया पड़ियो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने कोन ना मने कर एटा होची गोटे कोन डायगोनल एटा होची गोटे डायगोनल एटा गोटे डायगोनल तो ताको तो एंगल क्रिएट होची ना नहीं एटा गोटे एंगल क्रिएट होची एटा गोटे एंगल क्रिएट होची एटा गोटे एंगल क्रिएट होची ईच एंगल ता होची 90 डिग्री okay so the two diagonal meet each other at 90 degree and they also bisect each other understood so these 8 are the basic properties of rhombus okay so next we will discuss about another quadrilateral now we will discuss another type of quadrilateral that is known as square okay previously we had studied what is a rhombus okay rhombus is a quadrilateral exactly square is also a quadrilateral बुझिया कि नहीं तले स्क्वायर भी होची गोटे कोन quadrilateral it has first definition so it has how many sides it has 4 sides AB BC CD and DA right then second condition hela likely the rhombus a square has 4 sides and all the sides are of equal length ताले गोटे स्क्वायर रो सबु जाक साइड रो लेंथ समान हबो आउ कार समान होतला rhombus रो समान होतला स्क्वायर रो भी चारटा को साइड रो लेंथ समान हबो बुझियला सो all the sides are of equal length बुझियला कि नहीं ताले कोन लिख परिबा ना AB रो लेंथ is equal to BC is equal to CD is equal to DA okay next condition hela जे opposite side होचंती parallel ए साइड से तो parallel ए साइड से तो parallel okay so opposite sides are parallel symbol कौन हो parallel and this side also parallel okay so AB is parallel to DC and AD is parallel to BC बुझियला ताल देखिलो rhombus रो भी प्रथम तीनटा कंडीशन या थिला जे एटा गोटे क्वाड्रिलेटरल ये भी गोटे क्वाड्रिलेटरल rhombus रो चारटा को साइड समान स्क्वायर रो भी चारटा को साइड समान rhombus रो ऑपोजिट साइड पैरेलल स्क्वायर रो भी ऑपोजिट साइड पैरेलल so all the three condition of rhombus is equal with the all the three conditions of square right next condition हला ट्रिपल आई गला next condition हम पढिबा कोन ना in case of square each angle is equal to 90 degree एटा सबटा इंपोर्टेंट जिंस गोटे स्क्वायर रो प्रत्येक एंगल रो वैल्यू हो 90 डिग्री माने प्रत्येक एंगल ताले कोन हेतिबो इक्वल हेतिबो एंड ईच एंगल्स वैल्यू इज 90 डिग्री हला तलार केतरा एंगल रहला चारटा एंगल रो वैल्यू केते हेतिबो इंडिविजुअली 90 डिग्री ओके सो ऑल द एंगल्स are
90 degree. So angle A is equal to angle B. Angle A रा वैल्यू जहाँ angle B रा वैल्यू से है, angle C रा वैल्यू भी से है, angle D रा वैल्यू भी से है, which is equal to 90 degree. जोटा कि रंबस नथिला, रंबस देखियो केमितिका एमितिका कि नहीं ताल देखि पारछो एटा 90 डिग्री भरा जणा पडुची हो नहीं बट एटा 90 डिग्री होची ना देखिबा हला एटा 90 डिग्री को जाना एमितिका एटा भी 90 डिग्री देखो एटा भी 90 डिग्री और एटा भी 90 डिग्री. So each angle of a square is 90 degree. बुझियला ताले जदी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होंती ताले ऑपोजिट एंगल समान होबो कि नहीं होबो ए एंगल समान होबो कि नहीं होबो ताले से कंडीशन टा को भी सैटिस्फाई करिवो जे ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एउटा में बुझा पड़ जिवो. एंड देखिला डी एंगल कंसेक्यूटिव एंगल किए सी एंगल डी और सी को मिसेला केते होची 90 plus 90 that is 180. Similarly D रो कंजुगेटिव किए A ताले D आ A को मिसाइल केते होची 90 plus 90 केते हला 180 डिग्री. तेटा हम कोन जानिले जे गोटे स्क्वायर रो कंजुगेटिव एंगल माने जदि हम ऐड करिबा ताहाले भी त रिजल्ट केते हबो एक्जेक्टली 180 डिग्री हबो हला. सो इडी आ गोटे कंडीशन हम लिखि दबा कौन ना opposite angles are equal, opposite angles are equal and sum of consecutive angle is 180 degree. Sum of consecutive angle is 180 degree. बुझे कि नहीं रहला फिफ्थ रूल. देन असला सिक्स्थ रूल. सिक्स्थ रूल टा गोटे इंपोर्टेंट रूल देखो एटा गोटे फर्स्ट डायगोनल AC and another diagonal is BD. In case of rhombus the length of two diagonal are unequal. rhombus रे कोन होतला ना दुटा को डायगोनल लो लेंथ समान नथिला असमान थिला डिफरेंट थिला बट एठी स्क्वायर केतरा कोन होची देखिलो समान बडा देखाउची ना नहीं यस. So the length of two diagonals are equal. Okay. So the length of two diagonals are equal. ताले AC रो लेंथ जहा हबो BD रो लेंथ भी सेया हबो. Okay, this is the sixth rule. बुझियला कि नहीं एबे सेवेंथ रूल आड बसिबा. सेवेंथ रूल कोन कहला ना सेवेंथ रूल हला जे BD और AC डायगोनल परस्पर को गोटे पॉइंट रे कोन करछन मीट करछन. ओके एंड एट दिस पॉइंट दिस टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एई पॉइंट रे कोन हबो ना दुईटा को डायगोनल परस्पर को समान दुई भाग रे विभक्त करिवे. ओके सो एट द पॉइंट O एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन माने कोन जो पॉइंट है दुटा का डायगोनल परस्पर को मीट करंती ताको कहै छै पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ओके आ गोटे कंडीशन बिटी हम ऐड कर दे परिबा कोन दुईटा को डायगोनल परस्पर को तो बाइसेक्ट करू जंती किंतु ताको गोटे एंगल क्रिएट होछि ना नहीं एटा गोटे एंगल क्रिएट होछि ना एटी गोटे एंगल क्रिएट होछि एटी गोटे एंगल क्रिएट होछि. So the angle created between two diagonal is also 90 degree. तो एठी जो दुटा हम डायगोनल ड्रा करूने से मान को भीतर भी एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल ड्रा होची. 90 डिग्री माने कोन कहि परिबा परपेंडिकुलर. So the two diagonal intersect each other and they are the perpendicular bisector. Bisector माने दुई भाग रे विभक्त भी करू जंती ता भीतर एंगल भी 90 डिग्री रहउची. ओके ताको हम चाहिले गोटे सेंटेंस से लिखि दे परिबा at the point of intersection the two diagonals bisect each other. bisect माने बुझियला समान दुई भाग व्यक्त करचंती केते डिग्री रे 8 an angle 90 degree 90 डिग्री परस्पर को bisect करचंती. ताले हम लिख परिबा OB = OD and OA is equal to OC.
बुझिला आ ए एंगल गुडा केते 90 डिग्री त लिख परबो AOB एंगल अच्छा ए एंगल ना कोन ना BOC एंगल ए एंगल नेम कोन ना COD एंगल आउ ए एंगल ना कोन ना DOA एंगल ए सब जाक एंगल रो वैल्यू केते 90 डिग्री okay this is the basic idea and concept of properties of square बुझिला तरे बर्तमान क्वेश्चन एराइज होला जे गोटे स्क्वायर को हमें रम्बस कहि परिबा की गोटे रम्बस को हमें स्क्वायर कहि परिबा की देखिबा देखो एटा जदि गोटे स्क्वायर हुए एटा होची रम्बस हला स्क्वायर चारटा को साइड समान यार चारटा को साइड समान स्क्वायर दुटा को ऑपोजिट साइड पैरेलल यार दुटा ऑपोजिट साइड पैरेलल स्क्वायर चारटा लाइन चारटा साइड को नहीं तैयारी ये भी चारटा साइड को नहीं तैयारी ताले समान एते पर्यंत चली छी यार प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बट यार प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नु है बुझियला गोटे डिफरेंस आसी गला तापर यार ऑपोजिट एंगल समान यार भी ऑपोजिट एंगल समान यार कंजुगेटिव एंगल मिसी के 180 डिग्री यार भी मिसी के 180 डिग्री आ दुटा एक डायगोनल कोन एठी सेम बट एठी सेम नु हो ताले सेकंड डिफरेंस आसी गला ये सब रूल को फॉलो करूची किंतु ये दिटा रूल को फॉलो करि पारु नाही हला तापर एमान को एंगल केते 90 डिग्री एठी भी एंगल 90 डिग्री ताहले हम कोन जानिले ना स्क्वायर होबा पई रम्बस एलिजिबल नुह काहे की ना रम्बस रे सब जाक एंगल 90 डिग्री नुह फर्स्ट कथा सेकंड कथा हला दुईटा को डायगोनल लेंथ समान नुह सो ए rhombus can never be a square but a square can be a rhombus स्क्वायर टा rhombus सब रूल को फॉलो करछि कि नहीं करूछि बट ये करू नहीं तले हम कोन लिखि परिबा हम लिखि परिबा नोट a square can be a rhombus but a rhombus cannot be a square ताले गोटे स्क्वायर को हम rhombus कहि परिबा बट गोटे rhombus को हम स्क्वायर कहि परिबा ओके